Hello guys, my name is Dr. Huma Hassan and I'm continuing my lectures on NCERT class 11th and in future it's going to be 12th class NCERT Sociology book. So let's continue from where we have left. Now in this paragraph, you would see that how economical changes has brought a major change in social structure of European society. Okay, so basically in this paragraph, what we are understanding that whensoever society is changing, it is not only because of one factor. There are multiple factors involved. Now, in later part, when we are going to talk about modernity in detail, we would understand that how intellectuals in the beginning have played a pivotal role in explaining that how we should be learning about society with respect to facts, okay, which we have discussed earlier. But now what is happening in 18th, 19th century, because of economical changes, or in other words, because of industrialization, we have got urbanization. Now the traditional way of life, the feudal, economical, political and social structure got collapsed, and it ushered into a new form of social structure, which you can also refer as a part of modernization. So the old traditional system was declining and the new ways of life were beginning. So industrialization we need to understand as a economical structure, because whensoever we are learning about sociology, we are reflecting on society, and in society we do have to from the beginning we need to reflect on a common definition that society is made up of interrelated parts, in which social family kinship is one institution, then you have economy as another institution, and then we do have a political system, and together it is bringing our society as a whole. So what is very much important for the functioning of society? All social institutions are complementing each other and working together. Now in 18th, 19th century, because of industrialization, because of material changes, some adversity happened, and it finally led to the development of sociology. So you would see that Auguste Comte spoke about positivism. He argued that we required a discipline that can study society in a scientific manner. Then we would see that later on, when industrialization got its peak, it brought massive rapid changes, not only in Europe, but in all over places in the world. And that has brought profound social economical changes. And there was a chaos in society. Now, in coming lectures, I will explain that whensoever there is a chaos, there has to be a reason. There has to be a reason to reflect it, to understand that why this disruption happened. Okay, so you must be knowing, I must have told all of you that Auguste Comte has called sociology as a social physics. Now there are multiple ways to explain and learn about sociology with respect to physics. Okay, that is why before coining the term sociology, Auguste Comte had called social physics. Now the changes which I am explaining, we can always bring unique perspective. So I can explain societal changes, or how society got transformed, and how later on we have got anti-positivist approach to understand society by examining chaos theory in physics. Okay,
So what is chaos theory? You must be knowing, those who are coming from science background, you people must be knowing about butterfly effect. Now, as a scientist, as a natural scientist, also social scientist, you know that mathematicians or physicists, physicists are dependent on mathematics, and mathematics physics is just one discipline with different scope or focus. You can see that. Now they all are arguing that what do we do, like, in experiments, in research. So natural scientist research, whether it is astronomer, whether it's mathematician or physicist, they do understand, they understand their present, they understand, and then they do research on their present events to predict future. Okay, now on the basis of our present analysis we predict something. This is the nature of social research, even specifically even in sociology. This is what even Auguste Comte have argued, that the sociologist has to look for some laws. So this physical world is based on certain laws. This is what Auguste Comte have also argued, that you need to look for the laws to understand societal changes. Now, what is butterfly effect? Butterfly effect means in physics that even the tiny changes can bring, or can bring chaos in future. So you must have predict that, okay, 2 plus 2 is this 4, and then something would happen. But there might be some tiny changes in your equation or whatsoever, like, you were analyzing, that can bring profound changes. Okay, why we have got the butterfly effect? Because it is telling us about the patterns. Okay, so there is some dot, and then the patterns, and then we have got the changes. So this is actually had happened in sociology as well. So during Renaissance period, intellectuals predicted, during Renaissance period followed by Enlightenment, intellectuals thought that if we are going to replace our religious dogmatic theory, just a moment, I'll take 5 more minutes. Okay. Yeah, so sorry guys, I just wanted to explain that how we have to bring this butterfly effect or the chaos theory which we read in physics to understand sociology. Because see, during Renaissance phase, followed by Enlightenment, and then we do have got political revolutions. So what is Renaissance? Those who do not know this term, since I am teaching class 11 sociology, so I do not have to use lot many abstract words, but Renaissance means rebirth. Okay. So during Renaissance phase, what happened? Intellectuals predicted that if we are going to have humanistic values, then there will be a social prosperity or social order. Okay, so ultimately all sociologists are writing their theories or giving sociological perspectives so that society may social order maintain rahe. We should have social stability. If you remember, in my previous lectures I have explained that how it is so very important for all of us to understand the time frame in which authors or social thinkers are writing. So when Auguste Comte was writing, he was also very much disturbed by the changes, by the chaos that happened in France because of French Revolution. So what he did, he said that it is so very important for sociologists to understand what and how we have got the social changes. So he said that the role of a sociologist to understand social statics. मतलब ऐसे समझो कि अगर कुछ चीज आपके पास एग्जिस्ट करता है तो वो ऐसा क्यों है, why, when, where, how, और अगर वो कल को चेंज होगा तो वो क्यों होगा. So it is like prediction, right? So जो आपकी फिजिक्स में बटरफ्लाई इफेक्ट है,
ओके, बटरफ्लाई इफेक्ट क्यों मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज आपको यूनिक कंटेंट भी लिखना होता है, राइट. आई एम अबाउट टू फिनिश दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन एनसीईआरटी. तो मैं आपको भी एक एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ कि किस तरीके से ज्यादातर बच्चे साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और उनको लगता है कि भाई हम सोशियोलॉजी लेंगे, हमने कभी सोशियोलॉजी पढ़ी ही नहीं है, या हम एंथ्रोपोलॉजी लेंगे, कभी हमने एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ी, हम कैसे रिलेट करेंगे. सो इट टोटली डिपेंड ऑन कि आप, इट टोटली डिपेंड्स कि आप किससे पढ़ाई कर रहे हो, राइट. आपको थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ही होगा डेफिनेटली. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है नेचुरल साइंस में और सोशल साइंस में. आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन ही कर रही हूँ बटरफ्लाई इफेक्ट, केओस थ्योरी, जो कि फिजिक्स की थ्योरी है. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बात करी इमेजिनेशन की, तो सिरिट मिल्स ने भी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात करी है. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग. सो वही मैथमेटिक्स भी यही कर रहे हैं, मैथमेटिशियन भी क्रिटिकल थिंकिंग को, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को, फॉर्मूलाज को समझते हैं. फिजिक्स भी वही कर रहे हैं एंड सोशियोलॉजिस्ट भी वही कर रहे हैं. इनफैक्ट ऑगस्ट कॉम्टे हैव आर्ग्यूड दैट सोशियोलॉजी इज द क्वीन ऑफ ऑल अदर साइंसेस, क्योंकि वो सारे डिसिप्लिन्स को समझती है, वो सारे एस्पेक्ट्स को समझती है. तो आप देखो कि किस तरीके से बटरफ्लाई इफेक्ट या केओस थ्योरी आप अंडरस्टैंड करोगे इन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, तो ये यूनिक पर्सपेक्टिव मैं आपको दे रही हूँ. आप ये फर्दर जब आगे मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगी वेस्टर्न सोशियोलॉजी, वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट एंड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तब आपको और क्लियर होगा. राइट नाउ व्हाट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि रेनेसां फेज में ड्यूरिंग 14th-15th सेंचुरी फिलोसोफर्स, इंटेलेक्चुअल्स ने सोचा कि अगर हम रिलीजन को रिप्लेस कर देंगे, अगर हम रिलीजन डॉगमेटिक वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे ह्यूमनिस्टिक वैल्यू से, सो देयर विल बी अ सोशल ऑर्डर. ठीक है, तो बट ऐसा हुआ नहीं. रेनेसां अगर हम 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स अगर हम समझते हैं तो हम देखेंगे तब भी बहुत ज्यादा केओस था, लोग पॉवर्टी से मर रहे थे, फेमाइन था और बहुत सारे डेथ से, बहुत सारे सोशल इल से, तो प्रोस्पेरिटी नहीं थी. देन ड्यूरिंग नेक्स्ट फेज, ड्यूरिंग एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट का मतलब है कि अब हम अंधकार से उजाले की तरफ आ गए हैं. ओके, सो एक फेज आप कह सकते हो 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स टिल 12th सेंचुरी, इट्स अ डार्क एज. ओके, तो डार्क एज के बाद रेनेसां में फिलोसोफर्स ने कहा कि भाई हमको अपनी जो ट्रेडिशंस है, हमारी जो कल्चर है, उसको समझना होगा टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी. देन ड्यूरिंग एनलाइटनमेंट फेज, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, इट वाज सेड दैट साइंस ही जो है, साइंस, ओके, रैशनल अप्रोच ही जो है वो समाज में प्रोस्पेरिटी या सोशल स्टेबिलिटी लाएगा. सो वी वर हाईली पॉजिटिव विद एन आउटकम ऑफ साइंस. ओके, अब हमने क्या सोचा कि जो साइंस है वो जो है ह्यूमैनिटी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगी. ठीक है, ये हमने प्रेडिक्ट किया था, ऐसा हमने सोचा था, राइट. बट कुछ टाइनी चेंजेस हुए. केओस थ्योरी में आप क्या सोचते हो कि कुछ हमारी चेंजेस हुए और उसने क्या किया, उसने जो हमारा प्रेडिक्शन था वो पूरा उसको चेंज कर दिया. मतलब वैसा नहीं हुआ. हम जब वेदर प्रेडिक्ट करते हैं या क्लाइमेट चेंज करते हैं, एनवायरमेंट चेंज करते हैं, तो हम इसमें कुछ कैलकुलेशंस यूज करते हैं ना. तो वही रेनेसां और एनलाइटनमेंट पीरियड के टाइम पे कैलकुलेशन फिलोसोफर्स ने सोचा था कि ऐसा होगा तो हम ये कर सकते हैं, ये सारी चीजें. बट क्या हुआ, वी हैव गॉट सर्टेन चेंजेस, राइट. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंस टेक्नोलॉजी तो एडवांस हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एक चेंजेस और भी आया. यू कैन से टाइनी चेंज, ठीक है, जिसको आप बटरफ्लाई इफेक्ट से रिलेट कर पाओगे. वो क्या, पीपल हैव बिकम मोर ग्रीडी. जहां पे इंटेलेक्चुअल्स और फिलोसोफर्स पहले इनिशियली दे यूज्ड टू ब्रिंग फैक्ट्स. ओके, यू कैन से कि कोपरनिकस के साथ क्या हुआ था, गैलीलियो गैलीली के साथ क्या हुआ था, सोक्रेटिस के साथ क्या हुआ था. दे वांटेड टू ब्रिंग अ ट्रुथ. ओके, दे वांटेड टू ब्रिंग अ ट्रुथ इन सोसाइटी. सो समाज में वो फैक्ट्स लेके आना चाहते थे, इसकी वजह से उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, दे हैव आल्सो बिकम करप्टेड. ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे करप्टेड, वो भी थे,
बट यहाँ पे जो साइंस का मेजर यूज था, इट वॉज नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड बट फॉर सेटिस्फाइंग देयर ओन ग्रीड. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में होना तो ये चाहिए था अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कि ह्यूमैनिटी शुड बी ऑन इट्स पीक. अब कुछ लोग खाना बनाते, कुछ लोग फैक्ट्रीज में खाना प्रोड्यूस करते, and this is the model of socialism which he had talked about, and the communism, and then humanity should be engaged in some creative work. Now what is happening? Because of industrialization and urbanization, the basic nature of being human also got challenged. Okay, अब लोग बहुत ही lethal conditions में रहने लगे. Okay, so you would see that entrepreneurs have started, you can say, hiring researchers और साइंस में जो एक्सपर्ट्स थे, so that उनको उनके बिजनेस में प्रॉफिट हो. So this is a tiny change, you can say, कि अब यहाँ पे thought process ही change हो गया. Okay, so it was like the pursuit of profit. Okay, और ये सारा point जो है I have just brought it from NCERT only. Okay, so you can just understand कि किस तरीके से आप आंसर राइटिंग स्किल्स यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हो कि how you can bring the similarities between natural sciences and social sciences, right? So यहाँ पे भी changes हो गया. Now you would see that this change pre-industrial society which led to the growth of urban centers. Okay, now what it is bringing major problems, new kind of social attraction where children is working in factories and getting minimum wages, और जहाँ पे लाइफ को सपोर्ट करना ही मुश्किल हो गया था, right? So this is what you would see, and this is all mentioned in your NCERT. And now what happened? Because of this new world order, sociologists thought of, and specifically we can have the writing of Karl Marx and then Emil Durkheim, Weber, and so on. They realized that we need to examine these social changes more precisely. We do have to use quantitative, qualitative approach to bring peace in society. ऐसा नहीं था कि statistical studies नहीं थी. Statistical studies थी, make a point on it. Okay guys, statistical studies थी, ये पता था कि फैक्ट्रीज में कितने बच्चे काम कर रहे हैं, कितने फीमेल्स काम कर रहे हैं, और यू कैन सी कि उनकी सैलरी कितनी है, उनको सैनिटेशन का क्या प्रॉब्लम है, वो घर में कैसे रह रहे हैं, ये इन सबका डेटा जरूर था हम लोगों के पास, बट सोशियोलॉजिकल लेंसेज नहीं थे. व्हाट इज सोशियोलॉजिकल लेंसेज? कि रीजन क्या है इन लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ, इसको हम रिकमेंडेशन क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, ह्यूमैनिटी को किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं टू रीच ऑन इट्स पीक, टू हैव सम सॉर्ट ऑफ positive development in society. So all this actually led to the development of sociology. Okay, so this is what I have explained, and this is what you people have to read. So in this particular paragraph, the material issues that went into the making of sociology, I have just explained to all of you, and I have explained with a unique perspective of butterfly effect, because later on you will realize that what is sociology and what sociologists are doing. Sociologists are making their theories with respect to multiple causes and effects. Okay, so it's a cause and effect relationship which sociologists or sociology reads. Okay, so I would say you people can understand about this particular paragraph on the pages. So this is till 12th paragraph. Okay, and then you would see why should we study the beginning and the growth of sociology of that too in Europe. Okay, that we are going to talk about later on. So in today's lecture I have summarized that how industrialization led to the development of sociology, and I have also tried to given you a new concept, that is a butterfly effect, that is a physics theory, and then you people can relate it in your advanced level of understanding. But this should be your thought process. You are preparing for civil services. आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बेसिक इतना भी बेसिक नहीं होना चाहिए. शुरुआत से आपको क्लियर होना चाहिए कि ठीक है, यू नीड टू राइट यूनिक कंटेंट एज वेल. सो आई होप यू पीपल आर गेटिंग